ninth session of the pre-examination training for limited departmental audit and account examination in ICR system. So there is a little bit change in the schedule of our program due to non-availability of the resource person on GEM. The 2-day session will be delivered by me on depreciation and reserve. So depreciation also is the part of your syllabus. Okay. So in the WhatsApp group, people are writing frequently. Please don't similar type of information, same information, don't post frequently. We all are there in the group. We very well understand your problem. You also try to understand our problem. Wherever feasible, wherever possible, resource person will deliver the session by using English, Hindi language, no problem. But sometimes it may so happen that using Hindi language to deliver a session, to conduct a session becomes difficult. If I will tell you conduct a session on accounting, final account, trading account, balance sheet, even if concept or convention, it is not so easy to deliver the session on through Hindi language. Even if for a Hindi background candidate also, it is not so easy. So I have requested to all the resource person, wherever possible, wherever feasible, they will conduct the session through Hindi. And anyway, everything is written in English only. So we all the participants can very well understand. It is written in very simple language. If anyone is having any doubt, you can write it down in the chat box so that it will be clarified. Maybe on the same day or maybe afterwards with the help of the resource person. So I would request the 2-3 people are there. They have been frequently writing you, sir, please speak Hindi. Okay, we understand your problem. You also try to understand our problem. All the resource persons are not familiar with Hindi language. Okay, number 1 point. Number 2, so many participants are there from South also. So many participants, they can't understand Hindi. So we have to run the program, take the sessions in a balanced way. Wherever applicable, wherever feasible, we will use Hindi language, no doubt. And wherever it is not feasible, we will use English. Okay, you try to understand. But as regards your doubts, as regards your PPT bilingual is not, it is not feasible for us to share the PPT in bilingual. It is not feasible because you have seen 50 sessions will be conducted. Okay, and PPT is being shared by the respective resource person only. Means today I am going to deliver the session on depreciation. So this PPT has been prepared by me only. So every resource person cannot prepare the PPT by using bilingual language. You should be very clear. And it is not so easy also. What best you can do is that if you feel every institute you may be having Hindi officer, Hindi section, this PPT we are sharing to you. So you can get it translated from your institute or with the help of your friends, it can be translated. Okay. So sharing, again, preparing PPT in bilingual language is not feasible.
Not feasible. Even if no resource person will agree on this point. Okay. You also try to understand. We will share study material, whatever extent possible. We'll cover almost all your syllabus. Something will be there. You try to cover. Okay. You try to mainly it is for your examination point of view only. Okay. It is from your examination of point of view. Oh, you don't think that the day-to-day office life we are facing so many problems while working, so many problems. So we have started questioning also. No, no, sir, this problem, that problem, it should not be also. From the examination point of view, what are the problem you are going to face? That you discuss. Okay, and this training program is being organized on and off. Every time it is being organized. Okay, for your enrichment of knowledge, you can attend subsequently also. But this program is specifically meant for appearing the examination. Okay. So with this, I again extend my hearty welcome to this ninth session of this training program. And today's session is on depreciation and reserve. And it will be delivered by me only. My screen is visible? Yes, sir. Yes. Yeah, yeah. As I told you, the today session is on depreciation and reserve. And so far as my knowledge goes, your syllabus includes depreciation, not reserves. But I have included a reserve, okay, for your knowledge sake only. But mainly, we will focus on depreciation. And again, for your information, wherever possible, I will describe Hindi also. You have questions, okay. And you just one more thing also you try to understand. Whenever a research person will go on describing the slides one by one, okay, completing if he is going through English, then coming back to Hindi again something there will be problem. Okay, in the pace, in the sequence, there will be some problem. If someone is going by Hindi, okay, let him complete. Is going by English, let him complete. Afterwards, okay, he may cover through English. Okay. So as today's session is on depreciation. So before knowing the depreciation, we should know what is depreciation and how it is charged, on which assets it is charged, whether it is charged on the fixed assets or current assets, and what is capital expenditure, what is revenue expenditure, like that. So first of all, I want to tell is that depreciation is nothing but it is the wear and tear of the value of assets when we are constantly using a particular asset, whatever it may be computer, maybe our office furniture, maybe building, maybe roads, whatever it may be. Whenever we are constantly using any assets, the value of that assets will be reduced. Yeah, gets reduced day by day. Means if in the first year we have purchased one laptop at the rate of 1 lakh, maybe after 5 years, if we will be selling that particular assets, that laptop may not fetch 1 lakh rupees. Means we may not be in a position to sell it at rupees 1 lakh. That means the value certainly will be reduced. Why it will be reduced? Now we have used 4 or 5 years. That is why the value of that particular assets will be reduced, will be decreased. So assets means there are two types of assets mainly. One is tangible assets, other one is intangible assets. Then what is tangible assets?
First of all, what is assets? We should know. Then tangible and intangible. Assets means any item which we have purchased for our business or for our enterprise. And if that assets, if that item is used for enhancing the earning capacity or increasing the revenue generation of the organization or the enterprise, it will be termed as capital expenditure. Means it is termed as assets, and the assets, the expenditure incurred for acquiring that asset is known as capital expenditure. Presently, we are receiving grants under 3 categories from the government of India. One is grant in aid capital. Everybody knows. Other one is grant in aid salary. Grant in aid general. The grant in aid general includes all contingency expenditure, day-to-day expenditure like payment of rent, payment of electricity, payment of wages, payment of insurance premium, like all the recurring expenditure. It is again known as recurring expenditure. Why? Why it is known as recurring expenditure? Because we are paying expenditure on those items, the benefit of which will be expired within that particular year. That means if we are paying salary or rent or wages for a particular month or for a particular year, the benefit the benefit we are getting out of salary or rent will be very much adjusted within that year, that month itself. Means salary for if we have paid salary for the month of February, means in the month of March again we have to pay salary. That means the payment which has been made for the month of salary for the month of February towards salary, that benefit will be adjusted, will be expired in the month of February itself. Means we can't avail the benefit in subsequent years or subsequent months. That expenditure is known as revenue expenditure. So capital expenditure is that expenditure which results in the acquisition of an asset or which results in an increase in the earning capacity of a business or increase in the efficiency of the assets. This is known as capital expenditure. Means any expenditure incurred for acquiring assets or for enhancing the earning capacity of the business or increase or enhancing the efficiency of an asset, that will be known as the capital expenditure. And in contrast to that, revenue expenditure is that the benefit of which will be expired within that year itself, that month itself. Okay, that means मैं आप लोगों को क्या बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स आप जो भी खर्चा करते हैं, उसमें जो भी आप एसेट प्रोक्योर करते हैं, वो एसेट आपका पास बिजनेस में रहता है या इंस्टीट्यूट में रहता है. ऐसा नहीं 1 साल में एसेट का वैल्यू खत्म हो जाता है. अगर आप कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं वो 10 साल तक रहेगा या 5 साल तक रहेगा. तो जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं जिसको आप यूज करके फॉर इयर्स टुगेदर यूज करेंगे, मे बी 5 years और 10 years, सो इट विल बी टर्म्ड एज एसेट्स. एंड जो ऐसा कुछ आप उसका जो बेनिफिट जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ आप एसेट प्रोक्योर नहीं करेंगे, मींस जो आपका एक्सपेंडिचर डे टू डे मेंटेनेंस के लिए होगा, it will be known as the revenue expenditure. Like example, payment of salary, wages, house rent, insurance premium, repairing a vehicle, repairing a plant and machinery, repairing house, repair and maintenance of house. All these of things are revenue expenditure. And capital expenditure is incurred for acquiring assets or for enhancing the earning capacity of the assets. Then with regard to assets, there are 2 types of assets. One is tangible assets, one is intangible assets. What is tangible assets? Tangible assets are those assets which can be easily seen or touched. Means हम जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो है tangible assets. Okay, example आपका land, machinery, plant and machinery, furniture, equipment,
These are tangible assets. And intangible assets are which cannot be seen or which cannot be touched, like those of things. Like it is only exist in legal term. Example, patent, copyright, goodwill. These are assets, but these are intangible assets. These assets means you can certainly identify the existence of a computer, yeah, the existence of a equipment, but you cannot identify the existence of goodwill, reputation of your firm, trademark, patent. These all are legal terms. These all are intangible assets. And certainly it is the intangible assets and tangible assets both are to be reflected in the balance sheet, in the asset side. Revenue expenditure, an item of expenditure whose benefit expands within the year. So that is known as revenue expenditure. Means this expenditure is incurred for the day-to-day maintenance of the organization or enterprise. Such expenditure does not increase the efficiency of the firm, nor does it result in the acquisition of something permanent. वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके आप कुछ ऐसे परमानेंटली कुछ एसेट एक्वायर नहीं किए, आप ओनली एक्सपेंडिचर किए, लाइक रिकरिंग एक्सपेंडिचर फॉर द डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ द फर्म. So what is the difference? What is the basic difference between capital expenditure and revenue expenditure? Capital expenditure is incurred for acquisition of fixed assets. आप fixed assets purchase करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे हम. एंड डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा. एंड capital expenditure are incurred in increasing the value of the fixed assets, and whereas revenue expenditure, they do not increase the value of the fixed assets. Capital expenditure increase the earning capacity of the organization, whereas revenue expenditure are incurred to maintain the earning capacity of the organization. The benefit of the capital expenditure extends to more than 1 year. Means अगर आप एक कंप्यूटर ले लिए, इक्विपमेंट ले लिए, वो इक्विपमेंट कंप्यूटर को आप ईयर्स टुगेदर यूज कर सकते हैं. ईयर टुगेदर यूज करके उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं. लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट आप उसी साल में ही खर्चा हो जाएगा, उसी मंथ में ही वो एडजस्ट हो जाएगा. वो उसका बेनिफिट फिर आपको आप 10 साल के लिए नहीं रहेगा, लाइक एसेट्स. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, whereas revenue expenditure are recurring in nature. And this capital expenditure, these are shown in the balance sheets. Means any item obtained out of capital expenditures are reflected in the balance sheet in form of our assets, maybe tangible assets or maybe intangible assets. Whereas expenditure made in revenue expenditure will be charged to our trading account or profit and loss account or income and expenditure account, whichever the account, as per the applicability to your organization. If you are a non-profit making organization, then certainly we will be following income and expenditure account and receipt and payment account and balance sheet. So any expenditure will be debited to our income and expenditure account. Expenditure seems to be revenue, but treated as capital expenditure. There are certain expenditure which are seems to be revenue in nature. आपको लगेगा ये revenue expenditure है, but in our books of account, it is treated as capital expenditure. What are these expenditure? These expenditures are preliminary expenses, expenses on acquisition and installation of assets, legal expenses to acquire the land, interest paid on loan taken for machinery till commercial production starts. These expenditure looks like revenue expenditure, but in our books of accounts, it will be treated as capital expenditure. Preliminary expenses means अगर आप कोई enterprise setup करने जा रहे हैं, at the beginning of the stage आपको जो भी सब expenditure जरूरत पड़ेगा उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो भी आपका लैंड एक्विजिट करेंगे, लैंड एक्विजिशन ऑफ लैंड होगा, लैंड जब परचेस करेंगे तो उसमें लीगल एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व होगा, या कुछ आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे या इवन कुछ एग्रीमेंट करेंगे
मीन्स उसको कुछ टाइटल क्लियर कराएंगे, वो जितना सब इवन कुछ प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करेंगे, लाइक मार्केटिंग टाइप लोग जो करते हैं, सेल्स प्रमोशनल उस टाइप का, वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है। एंड एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट्स, मीन्स आप एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं 1 लाख में, 1 लाख में आपका प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ 1 लाख, बट एट द टाइम ऑफ bringing this equipment from the seller to the our enterprise, we have paid maybe around 10,000 rupees on freight, on account of freight, or for installation of that item we have paid wages. So that wages and freight expenditure has also to be added on the asset side, means our original cost of the that particular equipment may be 1 lakh, original may be 1 lakh, but any expenditure incurred toward wages, towards freight, or bringing that item, for bringing that assets into productive condition, into working conditions, whatever expenditure incurred, that also will have to be capitalized. Means your value of the equipment will not be 1 lakh, it will be in addition to 1 lakh, wages and freight also have to be added. So this is also will be capitalized, means it will be capitalized in the sense it will be our not revenue expenditure, capital expenditure. Legal expenditure to acquire land. We have purchased land by paying 2 crores, for example, and we have incurred legal expenditure of 10 lakhs, for example. That legal expenses, certainly, अगर कुछ आप legal expenses किए हैं, आपका लैंड का परचेस प्राइस कैसा, तो ऐड हो जाएगा, ऐड होके आपका परचेस प्राइस अब लैंड हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्लस लीगल एक्सपेंसेस, वो ऐड करके आपका प्राइस हो जाएगा। आपका जो बैलेंस शीट में आप जो शो करेंगे कॉस्ट ऑफ द लैंड, इट विल बी इंक्लूडिंग द लीगल एक्सपेंसेस ओनली। देन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर मशीनरी टिल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। अगर आप कुछ लोन लिए हैं कुछ आपका मशीनरी के लिए, एंड जो लोन का वो लोन का ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, that interest also has to be capitalized in the same sense that interest on loan also has to be added to the cost of the machinery till the commercial production starts. तो ये जो इतना एक्सपेंडिचर जो है, it looks like revenue expenditure, but we have to treat this expenditure in our books of accounts as capital expenditure. Then what is depreciation? Depreciation means a permanent and continuing fall in the value of the assets. Means अगर आप कोई पर्टिकुलर assets को परमानेंटली यूज कर रहे हैं, कार आप परचेज किए 10 लाख में, 10 लाख में, अगर आप 2 साल यूज करेंगे उसका वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगा, वैल्यू रिड्यूस करेगा। तो वो जितना रिड्यूस किया, वैल्यू जितना कम हो गया, उसको ही नोन एज डेप्रिसिएशन, दैट विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। अगर 10 लाख में परचेज किए, मानिए आफ्टर 2 years इट विल बी the value will be 8 lakhs, so certainly the 2 lakh will be depreciation. But how this depreciation is calculated, what is the rate of depreciation, that we will be discussing afterwards. But basically the depreciation is that whenever we are constantly using any particular assets, the value of that assets gets reduced. So the reduction of that value is known as depreciation. According to Shima London, depreciation is the permanent decrease in the value of the assets due to use under the lapse of the time. Lapse, why lapse of the time? For example, आप एक नया कार परचेज किए, वो कार को बिल्कुल आप यूज नहीं किए, बहुत कम यूज किए, कभी कभार यूज करते हैं, 2 साल के बाद वो कार का वैल्यू वही ओरिजिनल वैल्यू रहेगा क्या? आप यूज नहीं किए, मे बी ओनली 10,000 किलोमीटर, मे बी ओनली 5,000 किलोमीटर इट हैज रन, आफ्टर 2-3 years will it fetch again same 10 lakh? No, certainly not. The price will be reduced, maybe from 10 to 6 lakh or 7 lakhs. So that is known as depreciation. Means even if the asset is not at all used, even if you are not using the assets, it is being idle, it is kept as idle, but the value will be reduced. That is, that the reduction value is known as depreciation. Then it is, depreciation is nothing, it is a provision against this loss of capital, and it is an integral cost of conducting the business during the effective commercial life of the assets, and it is not dependent upon the amount of profit earned. Means
irrespective of your profit and whether your enterprise is incurring profit or incurring loss, it has got no relevance with depreciation. It has got no relevance with charging depreciation. Even if you have procured any assets, whether you are using that assets or not using the assets, it has got no relevance. Certainly the value of the assets will be reduced. अगर आप कोई भी assets purchase करके रख दिए, यूज भी नहीं कर रहे, यूज करने से भी वैल्यू कम होगा, यूज नहीं भी करने से ऐसे रख भी देंगे उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसे बाहर में भी रख देंगे, सनशाइन, आपका मॉइस्चर, विंड, उसमें भी खराब हो जाएगा, उसमें 5 साल के बाद बिल्कुल काम भी नहीं करेगा। दैट मीन्स वो भी आपका वैल्यू लॉस किया। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेप्रिसिएशन? It is a non-cash transaction. Non-cash transaction means depreciation. And if any commerce student is there, they may be knowing. If we will charge depreciation, the journal entry will be depreciation account debited to that particular asset account. Means depreciation it has to be charged on a particular asset. Means for this amount, certain amount has to be deducted from our profit indirectly. In a common sense, you can tell if we'll charge depreciation of rupees 10,000, for example, our profit will be reduced by that 10,000 rupees. Okay, and if you are not charging depreciation, then our profit will be more by that 10,000 rupees. So that is why आप लोग देखते होंगे जब ऑडिट आता है, ऑडिट एक्सटर्नल इंटरनल जो भी, अगर आपका एनुअल अकाउंट देखते हैं, जो लोग एनुअल अकाउंट या ऑडिट टीम के साथ कन्वर्सेंट है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, वो लोग देखते हैं आप डेप्रिसिएशन ठीक ठाक चार्ज किए कि नहीं किए। अगर डेप्रिसिएशन गलत भी किए हैं, आपका बैलेंस शीट टैली होगा, नहीं कम लिए भी टैली होगा, ज्यादा लिए भी टैली होगा, लेकिन ऑडिटर फिर उसका पर पारा दे के जाते हैं। क्यों दे के जाते हैं? आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट अगर ज्यादा ले लिए बाय मिस्टेक, बैलेंस शीट विल टैली, कम भी लिए हैं बैलेंस शीट विल टैली, फिर भी ऑडिटर आपको पारा दे के जाते हैं। रीजन क्यों? रीजन क्या है? अगर आप डेप्रिसिएशन परफेक्टली चार्ज नहीं करेंगे, आपका प्रॉफिट और लॉस ट्रू फिगर शो नहीं करेगा। मींस अगर आप कम चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन 10,000 लेना था, अगर 10,000 लेंगे, प्रॉफिट 10,000 तक कम हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन डेप्रिसिएशन 10,000 नहीं लेके आप 1,000 लिए, दैट मीन्स प्रॉफिट आपका 9,000 ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ऑडिट बोलते हैं कि अगर आप डेप्रिसिएशन ठीक ठाक नहीं लिए, तो मीन्स आपका ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस will not be reflected. Means profit आपका ठीक ठाक दिखाई नहीं, आपको शो नहीं करेगा। So it is a non-cash expense. Means nothing is paid on account of depreciation. The enterprise, the institute is not going to pay anything on account of depreciation, but it is simply charged to income and expenditure account. Depreciation may be physical or functional. Physical means by use. अगर आप constantly use करेंगे, तो आपका value of the asset will be reduced. फंक्शनल मीन्स पैसेज ऑफ टाइम, या आपका ऐसे विंड, सन हीट, मॉइस्चर, उसके लिए भी आपका वैल्यू रिड्यूस करेगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स द आपका फिक्स्ड एसेट जितना है उसमें सर्टेन परसेंटेज विल बी चार्ज एज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, एंड दैट अमाउंट will be kept in a separate fund, maybe depreciation fund, like that, for replacing that original assets. Means अगर आप फंडामेंटली ऐसे कॉमन सेंस यूज करके बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करेंगे, क्यों? लैपटॉप हम खरीदा 1 लाख में, तो मैं उसका पर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करूंगा? इसीलिए चार्ज करते हैं जनरली। अगर मानो लैपटॉप का ऊपर डेप्रिसिएशन है 20% फॉर एग्जाम्पल, मीन्स अगर 1 लाख हुआ लैपटॉप का कॉस्ट, 20% हुआ 20,000, तो 20,000 एवरी ईयर आई हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। मींस मेरा प्रॉफिट से 20,000 सेपरेट करके रखूंगा, 20,000 में चार्ज किया, मींस प्रॉफिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, प्रॉफिट गॉट रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। वो 20,000 में 5 साल के लिए चार्ज किया, मींस प्रॉफिट को मैं 5 साल के लिए 20,000 ईच कम किया। दैट मीन्स 1 lakh after 5 years, I will be having with 1 lakh of rupees. That means with that 1 lakh of rupees, I can replace my this laptop. Means I can go for a new laptop.
Okay, so that is why the very basis is that it is a continuous fall in the utility of a fixed asset till the ends of its useful life. It is charged to the revenue to find out the net profit of the business. What I told you, depreciation, whatever the percentage, it will be charged to the income and expenditure account. One charge cannot be recouped afterwards. अगर आप चार्ज कर दिए उसको वो एनुअल अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा, उसको रिवर्ट नहीं कर पाएंगे. It does not depend on the fluctuation in the market value of the assets. Means अगर आपका लैपटॉप 1 लाख में खरीदे हैं, 2 साल का बाद उसका वैल्यू कम हो गया, मीन्स 80,000 हो गया, आप उसका कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका कॉस्ट 80,000 नहीं दिखाएंगे. जो 1 लाख जो दिखाए 1 लाख लेस डिप्रिसिएशन जितना होगा वो आपको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा एनुअल अकाउंट बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं. टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड्स इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू. मींस अगर आपका एसेट का टोटल वैल्यू है 1 लाख, डेप्रिसिएशन पर एनम आप अगर 20,000 चार्ज कर रहे हैं, दैट मींस यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख. 1 lakh is the cost of assets. You cannot charge depreciation more than 1 lakh. Means 1,02,000, 1,05,000, you cannot charge. You can charge only up to 1 lakh. It is always charged whether the asset is carefully handled or neglected or it is idle, as I told you. Irrespective of the use of the assets, whether you are using it or keeping it idle or using very minimal, that has got no relevance with the charging of depreciation. Then what are the causes of depreciation? One is physical depreciation, physical deterioration. The assets get physically deteriorated mainly from wear and tear and from erosion, rust, decay, from being exposed to wind, rain, sun and other elements of nature. Means अगर आप continuously use करेंगे या बाहर में रखेंगे, रस्ट होगा, सन हीट होगा, विंड होगा, रेन होगा, वो deteriorate करेगा physical. And functional क्या होगा? The assets may be out of use even though it is in good physical condition. It arises due to obsolescence and inadequacy. Means मोबाइल आप परचेज किए 2 साल के बाद ऑब्सोलेट हो जाता है, मींस उसका वैल्यू फिर कम हो गया, इनएडुकेसी हो गया. इनएडुकेसी मींस आपका जो मींस यू आर एन एंटरप्राइज, आपको एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए जो प्रोड्यूस करेगा पर डे 1 लाख क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल पर डे 1 लाख आपको चाहिए, लेकिन आपके पास जो मशीन है वो ओनली प्रोड्यूस करता है 50,000 पर डे प्रोडक्शन उसका. तो दैट मीन्स वो आपके लिए जरूरत नहीं है, आपके लिए थोड़ा हायर एंड का जरूरत है, तो इसलिए वो इनएडुकेसी हुआ आपके लिए. ड्यू टू टाइम फैक्टर ऑल्सो देर आर एसेट्स विद ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ लीगल लाइफ सच एज लीज, पेटेंट, कॉपीराइट. ये सारे जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स जो थिंग है, और ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम द मीन्स आपका जो एग्रीमेंट होता है लीज के लिए, पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए, that agreement will be for 5 years, 10 years, like that. That means after the end of the 10 year, the value of that assets or the value of that intangible assets will be zero. The provision for the consumption of these assets is called amortization. Means what is then amortization? Means tangible assets का ऊपर जो depreciation charge करेंगे, जो value reduce होगा, it is termed as depreciation. But intangible assets का ऊपर जो value उसका reduce होता है, it is termed as amortization, not depreciation. Same thing, but not depreciation. It is amortization. Then depletion. Some assets are of wasting characters, maybe due to the extraction of raw material from them. Natural resources such as mines, oil wells come under this category. Means अगर coal mines है, अगर कुछ oil wells हुए हैं, आप अगर regularly उसमें extract कर रहे हैं mines and oil, so naturally time will come, उनका वैल्यू कम हो जाएगा, उसमें कोल भी खत्म हो जाएगा, ऑयल भी खत्म हो जाएगा. सो दीज आर द causes of depreciation. What I told you, this is physical causes, as I told you, that's due to wear and tear, destruction, decay. Then functional, obsolescence, inadequacy, effluxion of time. Then these are the causes. What is depletion? It implies removal of unavailable but irreplaceable resources such as extracting coal from a coal mine or oil out of the oil well. Both depletion and depreciation are shown in the profit and loss account as revenue expenses. Means जैसे
एक अमोटाइजेशन बोला, अमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोटाइजेशन। डिप्लीशन, आपका अगर कोल माइन से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑयल से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको डिप्लीशन। अनटेंजिबल एसेट्स के लिए डिप्रिसिएशन। ये जो तीनों है, तीनों सेम है। वो चार्ज होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, वो आपका मीन्स आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उतना उतना ही प्रॉफिट कम हो जाएगा। then how depreciation expenses is calculated? The cost minus salvage value divided by estimate number of units into number of units extracted. Obsolescence, जैसे हम बताया, आप एक मोबाइल परचेज किए हैं, कुछ दिन का बाद वो ऑब्सोलेट हो जाता है, या आप कुछ अपने कंपनी में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ दिन का बाद अगर मार्केट में उसका डिमांड नहीं होगा, वो ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो ऑब्सोलेट होने से उसका भी कुछ, उसका वैल्यू कम हो गया। When an asset becomes out of date or it goes out of use due to new or improved technology or invention, this is called obsolescence, which means reduction or loss of usefulness upon old assets due to new invention or improved design upon existing assets. Obsolescence may be due to various factors: change in the method of production, change in the production design, change in model, or change in demand of a product. आपका मार्केट में डिमांड चेंज हो गया और वो मॉडल चेंज अगर करना पड़ा और वो प्रोडक्शन डिजाइन को चेंज करना पड़ा, तो वो केस में जो जो एर्लियर मॉडल है वो ऑब्सोलेट हो जाएगा। amortization, as I told you, it is applicable for the intangible assets. The process of writing of intangible assets such as goodwill, patent, trademark, license is called amortization. The process of writing of means उसका वैल्यू जो कम होगा दिन पे दिन, इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। दीज इंटेंजिबल एसेट्स हैव वैल्यू बेस्ड ऑन द राइट्स एंड प्रिविलेज दोज बिलोंग टू द ओनर। वो जो आपका गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, वो सारे लीगल राइट है। ये आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका फॉर्म में वो राइट आपको मिलता है, उसमें लिखा लिखा रहता है वो 5 साल के लिए वैलिड है या 10 years के लिए वैलिड है। आफ्टर द एंड ऑफ दैट पीरियड the value will be again, if time permits, if again it is demanded, it can be renewed, or it will have to be closed. It is an expense account and appears on the debit side of the income and expenditure account. What is fictitious assets? One assets fictitious, that fictitious assets are expenses or losses that are not completely written up during the accounting period in which they occur. Means, जैसे मैं बात किया 2-3 स्लाइड पहले, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर बिगिनिंग में एंटरप्राइज एस्टेब्लिशमेंट में पहले जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको सारे, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उसको बोलते हैं। वो एक्सपेंडिचर क्या होता है, 1 year में, मीन्स इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर आप करते हैं, अगर वो पर्टिकुलर ईयर में आप प्रॉफिट एंड लॉस को अगर चार्ज करेंगे, मीन्स प्रॉफिट अगर घटाएंगे वो सारा एक्सपेंडिचर लेके, तो आप फिर आपका बैंकरप्ट हो जाएंगे, आप लॉस में चलेंगे, हेवी लॉस। इसलिए एक प्रोविजन है, आप कुछ साल के लिए 5 years 7 years जो कुछ साल के लिए उसको आप इतना साल तक चार्ज करेंगे, मीन्स प्रॉफिट में कुछ उतना साल तक चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली कम होते जाएगा। अगर एक फर्स्ट ईयर में चार्ज कर देंगे तो प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाएगा या नेगेटिव में जाएंगे, लॉस हो जाएगा। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द related benefits are expected to be received in future years. Means आप ये जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्यों एक ही साल में चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्यों 10 years तक चार्ज कर रहे हैं, उसका रीजन ये कि उसमें जो बेनिफिट आपको मिलेगा, एक आप प्लान सेटअप करने जा रहे हैं तो प्लान सेटअप का बेनिफिट फॉर ईयर 10 years 20 years मिलेगा, तो फिर उसके लिए आप जितना भी एक्सपेंडिचर किए तो वो फिर आपका 1 year का प्रॉफिट से क्यों घटाएंगे वो सारे एक्सपेंडिचर को? नो, दैट मीन्स वो एक्सपेंडिचर को आप ओवर द इयर्स कि जितना तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा उतना तक आप चार्ज करते जाइए, सो दैट क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी प्रोपोर्शनेटली कम होगा एंड धीरे धीरे आप बेनिफिट आपको भी मिलता रहा है। तो इसीलिए फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल है प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन व्हाट इज deferred revenue expenditure? Revenue expenditure, I have told you, means any expenditure incurred for like towards payment of salary, wages, rent, insurance, it is revenue expenditure, means the benefit will be expired within that year. Deferred revenue means आप expenditure किए, उसका बेनिफिट एक साल में खत्म नहीं होगा, उसका बेनिफिट
थोड़ा ज्यादा ईयर तक चलेगा। तो deferred revenue expenditure are those expenditure the benefit of which are available for more than 1 year, and such expenditure is written up over a period of 3 to 5 years and not wholly in the year in which it is incurred. It is originally revenue expenditure, but only in peculiar condition it is treated as deferred revenue expenditure. Means it is a revenue expenditure, लेकिन अगर आप उसका बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा तो फिर आप उसको भी 5 साल तक चार्ज कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? heavy loss incurred due to unusual circumstances like lung strike, flood, war, etc. New firm may advertise very heavily in the beginning to capture a position in the market. आपको एक न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसके लिए आप हेवीली एक्सपेंडिचर करेंगे टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट। लेकिन वो जो इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, हेवी एक्सपेंडिचर, अगर आप 1 साल में प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करेंगे, योर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसको ईयर टू ईयर बेनिफिट जब तक मिलेगा तब तक आप चार्ज करते जाएंगे। फ्लक्चुएशन मीन्स आप मार्केट में कभी रेट बढ़ेगा, कभी कम होगा, कुछ भी होगा। इट हैज गॉट नो रिलेवेंस विथ डेप्रिसिएशन। आप मीन्स विथ योर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, आप जो रेट में एसेट परचेज किए हैं वो रेट में उसका पर डेप्रिसिएशन कितना होगा वो हिसाब से वो चार्ज होते जाएगा। अगर मार्केट में रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो रेट को लेकर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे। व्हाई डेप्रिसिएशन नीड टू बी चार्ज? हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेंगे? तो इतना जो जितना भी डिस्कशन हम किए, थोड़ा बहुत तो उतना ही जानकारी मिला कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से करेक्ट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर डेप्रिसिएशन ठीक ठाक चार्ज नहीं करेंगे, आवर प्रॉफिट आइदर विल बी रिड्यूस्ड और विल बी ऑगमेंटेड। ट्रू एंड फेयर व्यू इन द बैलेंस शीट, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाई देगा। एक्यूरेट असेटमेंट ऑफ कॉस्ट, आपका एक एसेट का कितना कॉस्ट है वो असेटमेंट एक्यूरेटली हो पाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, मींस अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज किए, आफ्टर डेप्रिसिएशन आपका पास जितना प्रॉफिट आया दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आज डिविडेंड। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड आपका पास कुछ पैसा होगा, वो पैसा से फिर अगेन आप एसेट परचेज कर पाएंगे। एंड सेविंग इन इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स में कुछ भी आपको सेव मिलेगा। देन व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? आपका डेप्रिसिएशन के लिए क्या क्या फैक्टर है वो जो आपका डेप्रिसिएशन को वेरी करता है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, आप कितना कॉस्ट में एसेट्स को परचेज किए थे? व्हाट इज द एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट्स, मींस आप जो एसेट्स लिए आप क्या सोचे? फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर परचेज किए, व्हाट इज इज एस्टिमेटेड लाइफ? मे बी 5 years, मे बी 6-7 years, बट सर्टेनली इट इज नॉट 20 years, नॉट 30 years। अगर आप बिल्डिंग एक लिए तो बिल्डिंग का कितना एस्टिमेटेड लाइफ होगा? 50 years। सो लाइकवाइज द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज रिलेटेड टू दीज थिंग्स। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, व्हाट इज द साल्वेज और स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ ऑब्सोलेसेंस। अगर आपको एक इक्विपमेंट को 2 साल में अगर आपको ऑब्सोलेट करना पड़ा, दैट मींस आपको डेप्रिसिएशन वही हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपका 1 लाख है लैपटॉप का कॉस्ट, 2 साल में आपको लगा है कि 2 साल में ऑब्सोलेट हो जाएगा, तो सर्टेनली आपको फिर डेप्रिसिएशन 50% रेट में चार्ज करना पड़ेगा। मींस 50,000 एवरी ईयर करने से 2 साल में आपको 1 लाख मिलेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करना मींस आपका प्रॉफिट से उतना पैसा कम करना। लीगल प्रोविजन देन एडिशन टू एसेट्स, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आपका एसेट में कुछ इंक्रीज होगा और कुछ एसेट परचेज कर पाएंगे। sorry, what are the methods of charging depreciation? One is when no provision for a depreciation account is maintained, and when provision for a depreciation account is maintained. Just for a glance, you just know there are two methods. One is when no provision for a depreciation account is maintained, and when provision for a depreciation account is maintained. Means आप जितना भी depreciation charge करेंगे, एक provision for a depreciation account maintain करके वो पैसा आपका पास रखेंगे, वो provision में रख के वो पैसा से फिर आप जब आप ये करेंगे पर एसेट को डिस्कार्ड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू में बेचेंगे, तो फिर वो जो अवेलेबल डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा उससे आप न्यू एसेट परचेज करेंगे। फर्स्ट, व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन, whenever we are purchasing any assets, the journal entry will be asset account debited to bank account. Means आप assets comes to the business, our
cash or bank balance goes out, means cash goes out from the business. That is why asset account debited to bank account. Whenever we are charging depreciation is a loss or expenses. So depreciation account to debited to asset account. And when the depreciation will be charged to profit and loss account to depreciation. So likewise, these are the journal entries only. What are the various method of charging depreciation? क्या method है? One is straight line method. These two method is important. Rest just for the namesake, two methods are important. Straight line method, reducing balance method. What is straight line method? You see, for example, we have purchased a laptop at a rate of 1 lakh. And for us, yeah, we are an enterprise. We have kept that. We have decided that we will be charging depreciation at the rate of 10% on this laptop. Acha, 10% means the cost of laptop is 1 lakh. So 10% of this comes to 10,000. That means under straight line method, every year you have to charge 10,000 every year. अगर आपका एसेट का वैल्यू 1 लाख है, आपका डेप्रिसिएशन का रेट अगर 10% है, तो 1 लाख इंटू 10% 10,000 हो रहा है डेप्रिसिएशन. Under straight line method, every year 10,000 rupees is to be charged, and this will be charged for 10 years. 10,000 each for 10 years. At the end of the 10 year, the depreciated value, total depreciation will be 1 lakh. Means on the 11th year, the value of the assets will be original value 1 lakh, less depreciation 1 lakh, value will be 0. That means straight line method में आपका value 0 हो सकता है. Reducing balance method में कैसे calculate होता है? Again same example. Asset value 1 lakh, rate of depreciation 10%. First year will be 10,000. First year depreciation amount will be 10,000. For the second year, what will be value? Now original equipment value 1 lakh minus depreciation 10,000. Book value comes 90,000. 1 lakh minus 10, 90,000. Then for second year, depreciation will be 10% on 90,000. It is 9,000. Second year, okay. For third year, what is the depreciation? Now 90,000 minus depreciation 9,000. 90 minus 9,000, 81,000. Though for third year, what will be depreciation? Now your 90,000 minus 9,000, 81,000 into 10%, 8,100. Likewise, the depreciation will be calculated. First year is 1 lakh into 10%, 10,000. Second year will be 1 lakh minus 10,000. First year depreciation 90,000 आया, 90,000 into 10%. सेकेंड ईयर में आ गया आपका 9,000. थर्ड ईयर में कितना होगा? 90,000 minus 9,000, 81,000. 81,000 का 10%, 8,100. Likewise, it will be calculated. This is first one is straight line. Means every year the amount of depreciation will be same. Every year will be same. But in the reducing balance method, the amount will be reduced. The amount of the depreciation will be reduced year after year. It will be reduced. First year 10,000, second year 9,100. 9,000. Third year 8,100. Likewise, it will go. Okay. So these two methods are very important. Rest only for namesake I have mentioned. I will share the PPT. You can note it down. The first method I have told you. This is the straight line method or fixed installment method or original cost method. In so many names it is known as this method of charging depreciation. How depreciation is calculated? Now original cost of fixed assets our 1 lakh minus estimated scrap value. अगर आप estimated scrap value 0 है, आप initial year में आपका scrap value कितना 0 ही है, तो अगर 1 lakh minus 0 that means 1 lakh divided estimated life of assets. आपको estimate करना पड़ेगा वो asset का value कितना है, life कितना है 10 साल. That means 1 lakh divided by 10. Oh, obviously 10,000 will be depreciation. So that in percentage. So in this way, it is written. Otherwise, we can take it in the percentage way also.
Under this method, a fixed proportion of original cost of the asset is written off annually, so that by the time asset is worn out, its value in the books is reduced to zero or residual value. Difference between straight line and reducing balance method. What I have told you already. Under straight line, the rate and amount of depreciation remains the same. Each year 10,000 होगा, but reducing balance method, rate the same होगा 10%, but the amount of depreciation will be reduced year after year. On the straight line, depreciation rate percentage is calculated on the original cost of the assets. Originally on 1 lakh, the amount of depreciation is calculated. But on the reducing balance method, depreciation rate is applied on the book value of the assets. Means that depreciation, original equipment minus depreciation, that is book value. On the straight line method, at the end of its life, the value of assets is reduced to zero or scrap value, as the amount is fixed. Yeah, 10%. Obviously, in the 10th year, it will be zero. But in the reducing, this reducing value method is also known as diminishing value method. Diminishing. In this value, the value of the assets will never become zero. क्योंकि हम आपका जैसे होल फिगर में नहीं लेते हैं, फ्रैक्शनल में आ जाएगा फाइनली, तो कभी ऐसा जीरो नहीं होगा. Then on the straight line, the older the assets, the larger is the cost of its repair, but the amount of depreciation remains the same each year. Depreciation amount तो सेम रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, लेकिन एसेट जितना ओल्डर होगा, आपका रिपेयरिंग कॉस्ट उतना ज्यादा होगा. And in case of reducing balance method, the amount of depreciation decreases gradually while the cost of repair increases. Computation of depreciation is comparatively easy. Means straight line method में easy है. 1 lakh into 10%, 10,000 every year. But reducing balance method में थोड़ा calculate करना पड़ेगा. Means 1 lakh minus 10,000, 90,000 into 10%, 9,000 होगा second year के लिए. Then this just at a glance you can go through. This is not so important. Annuity method. In this method, you just simply remember what are the various types of method. This annuity method, if possible, one sentence you remember. One sentence, if possible. Otherwise, important is your straight line method and reducing balance method, your diminishing method. Annuity method, in this method, the depreciation is calculated based on the annuity table, considering the amount to be required to replace the assets. Amount of depreciation remains the same in all the years. एक annuity table होगा, table का हिसाब से आपको annuity method calculate होगा. Depreciation fund method. The depreciation amount is calculated using the straight line or annuity method. The annual depreciation amount is set aside in an account called depreciation fund account. आप जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसको एक डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में मेंटेन करके रखेंगे, इसलिए एक सेपरेट मेथड इसको रखा है. डिप्लीशन मेथड, आप गाड़ी जो चलाते हैं, जो भी करते हैं, द डेप्रिसिएशन पर यूनिट ऑफ द एसेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द availability of the total units. Each year, depreciation is calculated according to the number of units extracted out of the assets. Like coal mines, जो बोला, oil wells बोला, अब जितना भी extract किए, depreciation accordingly जाएगा. Sum of years digit method, the amount of depreciation to be charged goes on decreasing every year. Every year कम होते जाएगा. Machine hour rate method. This method is used when the life of the assets can be known in terms of its uses in number of hours. Depreciation is calculated as original cost of assets minus scrap value divided by life of assets in hours. तो ये आप machine hour rate के लिए. Revaluation method. This method is used for items like loose tools, jigs, small item के लिए एक method adopt हुआ है, वो है revaluation method. But these all methods are not applicable for ICR. For us, we are only following straight line method. Just for your information, only straight line method we are following, not other method. You see, ICR is having certain policy. This is all about ICR policy only. Fixed assets and depreciation कैसे होता है? Fixed assets except progeny of livestock are stated at cost of acquisition, including inward freights, duties and taxes, and incidental and direct expenses related to acquisition, installation, commissioning. जैसे मैं बताया, आप लाइव स्टॉक छोड़ के जितना भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना होगा, कैसे होगा?
जो आप ओरिजिनल कॉस्ट जो भी आप परचेज किए, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस उसका कितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किए, कितना ड्यूटीज एंड टैक्सेस में खर्चा किए, कितना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में खर्चा किए, कितना उसको इंस्टॉलेशन में खर्चा किए, कमीशनिंग में खर्चा किए, जितना भी सारा एक्सपेंडिचर आप इनकर किए वो इट विल ऑल बी एसेट का वैल्यू में वो ऐड हो जाएगा। मींस अगर आप 1 लाख में आप परचेज किए, ये इंसिडेंशियल एक्सपेंडिचर का वैल्यू भी उसमें ऐड होके आपका वैल्यू में भी 1,20,000, तो आपका एसेट वो हिसाब से होगा। द प्रोजेनी ऑफ लाइफस्टॉक आर सेट अप as assets when they are born as assigning value based on expenditure incurred on prenatal and postnatal care of the mother and enhance till they are attaining particular age। means जो हमारा एनिमल साइंस का इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट के लिए वो सारे लागू है, या जो इंस्टीट्यूट में एनिमल है उसके लिए लागू है कि these item of expenditure are capitalized as the value of progeny but credited to capital reserve। जो भी लाइफ स्टॉक आपका पास है, काउ, बोफालो, गोट, वो सारा कैसे ट्रीट होगा। Fixed assets are valued at cost of acquisition or construction or at manufacturing cost in the year of capitalization less depreciation। Depreciation on fixed assets for the year is provided on straight line method as per Companies Act at the following rate। ये ICR का revised as approved by the governing body of ICR in its 236 मीटिंग हेल्ड ऑन 2016। ये मीटिंग में डिसाइड हुआ है, जीबी मीटिंग में, कि हम लोग आईसीआर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे स्टेट लाइन मेथड में करेंगे एंड एज पर कंपनीज एक्ट हम करेंगे। अभी क्वेश्चन कम्स, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरियस एसेट्स हमारे पास जो भी है, ये देखिए बिल्डिंग, टैंक्स, रोड 2%, एंड लैंड के लिए नो डेप्रिसिएशन, इसलिए लैंड के लिए कुछ लिखा नहीं। अगर आप लैंड परचेस कर रहे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 0, लैंड के लिए कुछ डेप्रिसिएशन नहीं है। बट बाकी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसेट्स देयर, you see the various categories of assets, these are the rate of depreciation। At this rate we are preparing our annual account in ICR system। means depreciation has to be calculated, and this if the item comes under vehicles, depreciation at the rate of 15%, if it comes under office equipment, depreciation at the rate of 10%। likewise depreciation has to be calculated। आप दूसरा हिसाब से बोल सकते हैं क्यों क्यों रखा गया ऐसे। मान लीजिए जिसको हम 10% रखे हैं, अगर 1 लाख है 10% मीन्स 10,000, दैट मीन्स हम ये मान के चले हैं कि 10 साल में 10 इयर्स में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मीन्स 10 इयर्स में इसका एसेट्स का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, हमको नया एसेट्स परचेस करना पड़ेगा, इसीलिए इसका वैल्यू 10% किया 10% किया गया। कंप्यूटर में देखिए 20% किया गया। क्यों ना, ये सोच के आईसीआर माना है कंप्यूटर एंड ट्यूबवेल कि 5 साल में उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मीन्स 5 साल में आपको नया कंप्यूटर परचेस करना पड़ेगा। अगर आप 20% का हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 5 साल में 100% हो गया। व्हीकल भी देखिए लगभग 6.5 ईयर्स में उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अदरवाइज भी सोचिए, रोड, ब्रिज, स्टोरेज 5%, मीन्स ये सोच के रखें 20 ईयर्स तक उसका वैल्यू रहेगा। ओके, सो दीज आर द वेरियस रेट्स। it is the rate applicable for ICR only। it is as per Companies Act and approved by our governing body। all fixed assets other than land and building, the depreciated value of which at the beginning of the year is 10,000 or less, and all fixed assets other than land and building purchased in the year for a sum less than 10,000 each year are depreciated at the rate of 100%। means ये क्या ICR का एक प्रोविजन है, अगर आपका वैल्यू ऑफ द एसेट्स 10,000 से कम है, 10,000 और लेस है, आप क्या करेंगे, उसको फुल्ली डेप्रिशिएट कर देंगे, फुल्ली। बट रिटर्निंग ए रेसिडुअल वैल्यू फॉर अकाउंटिंग कंट्रोल। मींस आप 1 रुपीज रखेंगे, मींस अगर इस पर्टिकुलर ईयर में आप ऐसा कुछ भी एक एसेट खरीदे जिसका वैल्यू 10,000 है, तो उसको डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे 9,999। मींस 1 रुपीज आप रखेंगे अकाउंटिंग कंट्रोल। और एक न्यू चीज इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आया है, 22-23 के लिए लागू हुआ है। क्या है, द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज at the applicable rate for the full financial year on assets acquired during April to September। means पहले हमारा क्या था
कि हम कभी भी परचेस करेंगे, अगर 31 मार्च में भी इक्विपमेंट 1 करोड़ का परचेस कर रहे हैं 31 मार्च में, वो भी एलसी का थ्रू में परचेस किए, वो भी हमारे पास एसेट्स आया नहीं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अगर हम एसेट्स में दिखाए, एडवांस में नहीं दिखाए, अगर एसेट में कुछ दिखाए 31 मार्च में भी लिए हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन 10% चार्ज कर देते थे पहले। अगर 1 करोड़ इक्विपमेंट है 31 मार्च में भी परचेज किए, अगर उसका डेप्रिसिएशन रेट 10% है, 10% है वो 1 करोड़, बस हो गया, हम 10 लाख ले लिए डेप्रिसिएशन, तो हम हमारा लॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो गया 10 लाख। इस बार ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट में भी समवेयर might be objection there, might be there, so that is why ICR has revised this policy। वो क्या किया, अगर आपका परचेज ऑफ द शेयर्स अप्रैल टू सितंबर का अंदर हो रहा है, एनी एसेट्स परचेज ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर, आप डेप्रिसिएशन फुल रेट में चार्ज कीजिए, फुल रेट 10% मीन 10%, 20 मीन्स 20 एज पर एप्लीकेबल टू दैट एसेट्स। अगर आप अक्टूबर टू का मार्च का अंदर आप एसेट परचेज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर हाफ ईयरली बेसिस। मीन्स अगेन कंप्यूटर एग्जाम्पल, अगर अप्रैल टू सितंबर में कोई कंप्यूटर परचेज किया गया है, उसका डेप्रिसिएशन 20% होगा, बट सेम कंप्यूटर अगर अक्टूबर टू मार्च में परचेज हुआ, डेप्रिसिएशन उसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 10% हो जाएगा। मीन्स आप यही हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दिस चेंजेस इज इफेक्टिव फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 22-23, मीन्स लास्ट ईयर एनुअल अकाउंट में ये हिसाब से एनुअल अकाउंट बनाए हम लोग। नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन लैंड एंड लाइफस्टॉक, लैंड का ऊपर लाइफस्टॉक का ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन नहीं रहता है। लैंड अगर लीज होल्ड लैंड होता है, तो लीज होल्ड लैंड होने से तो आप क्या करेंगे, if the land has been given on a lease for a term of 7 years, it should appear as a leasehold land, and 1/7 of that should be shown in the depreciation column for 7 years, means 7 साल तक आप डेप्रिसिएशन कॉलम में दिखाएंगे 7 years तक, unless in the meanwhile there is any change in the terms, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लीज का कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो 1/7 तक लीज होल्ड लैंड में आप दिखाएंगे डेप्रिसिएशन कॉलम में। वैल्यूएशन ऑफ ओल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे बात हुआ ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट्स, पेटेंट, नीड टू बी डन इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का हिसाब से वो वैल्यूएशन होगा। स्टॉक, अगर आपका पास कुछ स्टॉक होगा, देन वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, consumable etc has to be done in compliance of the accounting standard 2। animals used in the research are treated as expenditure on cash basis whenever they are purchased, or if however they are held in the large number and used for research as and when necessary, they will be classified as inventory। अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में परचेज किए रिसर्च पर्पस के लिए, दैट विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेंटरी, स्टॉक का हिसाब से आप लेंगे। बट अगर स्मॉल क्वांटिटी किए, वो एनिमल्स आर यूज इन रिसर्च आर ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑन कैश, एक्सपेंडिचर लेंगे उसको, मींस अगर स्मॉल क्वांटिटी है एक्सपेंडिचर के हिसाब से ट्रीट करेंगे। इन प्रैक्टिस क्या होता है, नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन गुडविल, गुडविल का ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता है, इट इज जनरली रिटर्न अप ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल का ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, बट जैसे अमोर्टाइजेशन का बात हुआ, 10 साल तक अगर गुडविल है तो 10 साल में उसका वैल्यू आफ्टर 10 years वो जीरो हो जाएगा। नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स नॉट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स फिर अगेन क्वेश्चन कम, व्हाट इज करेंट एसेट्स, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स। हम तो एसेट्स का बात किए, टेंजिबल इंटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स का बात तो नहीं किए। करेंट एसेट्स क्या है, current assets are those assets which can be easily converted into cash easily, like आप रेडीली कैश रखें, बैंक में कुछ पैसा रखें, आपका पास कुछ ड्राफ्ट फॉर्म है, वो कुछ स्टॉक है, इमीडिएटली उसको बेच पाएंगे जिसको, वो करेंट एसेट्स है। एंड फिक्स्ड एसेट्स क्या है, आपका लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, एवरीथिंग, मींस द कॉमन डेफिनेशन इज जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कैश को, उसको करेंट एसेट्स बोलेंगे। मींस हम चाहेंगे मुझे कैश चाहिए तो इजीली मिल जाना चाहिए, वो करेंट एसेट्स, एंड जो इजीली नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ये डेप्रिसिएशन पॉलिसी ऑफ आईसीआर, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि अगर आप अप्रैल टू सितंबर में परचेज किए कर रहे हैं एसेट को, तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन अगर आप अक्टूबर टू मार्च के अंदर परचेज कर रहे हैं,
हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये आप 24 मार्च 2023 में ये नोटिफिकेशन आईसीआर का आया है। ये रिजर्व इज नॉट your means it is not under your syllabus, but still for a information sake only. The amount of reserve is an appropriation of profit. Hence, profits retained in business without having any of the attributes of a provision are to be treated as reserve. They are meant to be strengthen the financial position of a business and to meet the contingency which are indeterminate at the time of making the provision. Means आप प्रॉफिट से कुछ अमाउंट निकाल के रखेंगे रिजर्व, इसीलिए रखेंगे कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, कुछ सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए आपको रिजर्व चाहिए। देन क्यों रिजर्व हम क्रिएट करेंगे ना, एक्सपेंशन, अगर आपको बिजनेस को बढ़ाएंगे और आपका फाइनेंशियल पोजीशन को हम इंक्रीज करेंगे और वर्किंग कैपिटल बढ़ाएंगे या फ्यूचर में ऐसा कुछ लाइबिलिटी आएगा उसके लिए अल्सो, तो ये इसके लिए सारे हमको रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है। तो रिजर्व का क्या है फीचर्स? Reserves are appropriation of profit and they do not affect the current year's profit. Means profit से ही reserve create होता है. These are recorded on the liability side of the balance sheet. Means अगर कुछ reserve आप create करके रखें वो balance sheet का liability side में जाएगा. Reserves may be classified as general reserve or specific reserve. When the amount of reserve is invested outside the business in purchase of security, it is known as reserve fund. The amount representing the reserve does not constitute any liability or provision for depreciation. These are the different type of reserves: open or published reserve, secret or unpublished reserve, capital reserve, revenue reserve. Then under revenue reserve, general reserve, specific reserve, and reserve fund. Open or published reserve क्या होता है ना? Those reserves which are specifically created by debiting the profit and loss account and shown specifically on the liability side of the balance sheet are called published reserve or open reserve. जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके क्रिएट करते हैं जो रिजर्व को, उसको आप ओपन और पब्लिश रिजर्व बोलते हैं। देन कैपिटल रिजर्व क्या है ना? प्रॉफिट में अराइज फ्रॉम ए सोर्स अदर देन नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, सच प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व और कैपिटल प्रॉफिट. एनी रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व. It is utilized for making capital losses. Such profit is earned in the following ways. वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कैसे आ रहा है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. इट इज आर कैपिटल प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड and revenue reserve is profit earned by a business through its normal activity is determined at the year end through profit and loss account. The portion of such profit which is not paid to the proprietor but kept apart is known as revenue reserve. General reserve, reserve which is created not for any specific purpose but for strengthening the financial position of the business is known as general reserve. Means at best if you can remember one sentence out of this reserve, it will be good. Specific reserve, reserve created for any special purpose is known as specific reserve. Reserve fund, when the amount of reserve is invested outside the business in government security, it is known as reserve fund. Secret or unpublished reserve, the term secret reserve refers to a reserve the existence of which is not disclosed in the balance sheet. Secret reserves are also called hidden reserve or internal reserve. Such reserve is not disclosed on the balance sheet. वो तो हम नहीं करते इस टाइप का, हो सकता है प्राइवेट फर्म कोई करते होंगे. And provision means providing for possible loss or liability, the amount of which cannot be determined exactly. For example, provision for doubtful debts. Hence, it is not possible to determine the exact portion of the current year's debt which will turn bad next year. Means आप कुछ लोन दिए हैं, उसमें कुछ रिकवरी करना है, हो सकता है कितना देगा कितना दे नहीं पाएगा वो आपको पता नहीं है. उसके लिए आप कुछ प्रोविजन क्रिएट करके रखेंगे ये सोच के, हो सकता है वो कुछ पैसा रिफंड नहीं करेगा फ्यूचर में. So this is all about my presentation on reserve and depreciation provision. Now it is over to participants. Any doubt? Anything? Thank you.
you listen. Practical question, whatever you'll ask, I can give you. You do not know. You may not be, means so many questions I can give you, but people are not means giving answer. You see the pre-training quiz, only 100 people have given answer. Only 100 people. Okay, but there are more than 300 participants. Only 100 people have given the answer. Okay. Today only I am again giving some assignment. Maybe it is already sent or it is being sent. Okay. Assignment means you have to prepare trial balance, you have to prepare trading account, you have to prepare balance sheet. Sandeep, make them unmute. Make them unmute. Okay, sir. उनको बोलने दीजिए. हाँ सर. तो असाइनमेंट हम आपको कुछ आज दे रहे हैं. अगर उसको तर्क कीजिए. वो जो असाइनमेंट दे रहे हैं आपको, आप मंडे सेशन से पहले आप दीजिएगा कंप्लीट. क्यों नहीं तो मंडे का बाद जो देंगे उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, दो असाइनमेंट इन द सेंस क्वेश्चन आंसर आई एम गिविंग. ओके, यू हैव टू प्रिपेयर. एनी डाउट? सर जो आपने बताया था ना वो 1000 पे 1 रुपी का हम दिखाते हैं, असेट 9999 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो हाँ. कैसे, एक बार उसको एक्सप्लेन करना दोबारा. नहीं, वो जो वैल्यू 10,000 और लेस जो वैल्यू होता है एसेट का, या उसमें कोई इक्विपमेंट भी ले लीजिए. एक कंप्यूटर 1 लाख फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख हो रहा है, आप डेप्रिसिएशन जितना भी चार्ज कीजिए, लेकिन कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम योर डेप्रिसिएशन मोर देन 1 लाख नहीं होगा. डेप्रिसिएशन 1 लाख का अंदर ही होगा. मींस 1 लाख भी उसका वैल्यू भी आप जीरो भी नहीं दिखा सकते इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर एसेट का वैल्यू 1 लाख है, डेप्रिसिएशन ज्यादा से ज्यादा 99,999 होगा. 1 रुपीज आपको अकाउंटिंग कंट्रोल के लिए दिखाना पड़ेगा. 1 रुपीज आप जीरो नहीं कर सकते. जीरो करने से वो डेप्रिसिएशन को आप आइडेंटिफाई, वो एसेट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है सर. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर नमस्कार, नवनीत कुमार बोल रहा सर. हाँ जी, बोलिए. सर अगर कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया है, उसका 1 ईयर में रिन्यूअल होना है, तो उसको हम कैपिटल कंसीडर करेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सुनिए, सॉफ्टवेयर कोई इंस्टीट्यूट को कैपिटल ट्रीट करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट रेवेन्यू ट्रीट करते हैं. ओके, तो अगर रिन्यूअल का बात जहां आ रहा है, रिन्यूअल तो वो सब्सक्रिप्शन टाइप का होता है, तो मेरा हिसाब से तो उसको आप रेवेन्यू में ट्रीट कीजिए. ओके सर, ओके. Any question? Secret reserve, you see, secret reserve, it means in government organization or in ICR, we are not following this pattern. But thing is that, okay, if you are asking, I am telling. For example, officially, our vehicle, office vehicle, means the life of that asset is no more. Means it has exhausted its life. Kilometer, 6,50,000 kilometer covered, some years also covered. Means officially everything is exhausted. Okay, but again we are using that. You are using and we are earning profit. We are not earning. Maybe people, institute, yeah, some enterprise, private enterprise, they will be showing in their books of account this value of the assets as zero. Okay, but by using that assets, by deploying that assets, they may have they may earn some revenue, they may generate some income. Okay, so that is that way they can create secret reserve. Okay, but in our system it is not there. For your information sake only I told. Yeah. सर मैं ये जानना चाह रहा था, थर्ड पेपर में ये सारी चीजें दे रखी है, जबकि वो नॉन प्रैक्टिकल पेपर है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से पेपर में आएंगे सर? प्रैक्टिकल होगा ना सर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सब आपका
जिसमें थर्ड इनकम थर्ड थर्ड पेपर जो दे रखा है ना सर, उसके सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, बजटिंग वगैरह और ये ऑडिटिंग वगैरह, सुनिए ये सारा जो है फ्रैंकली थर्ड पेपर स्पीकिंग, में है। सुनिए फ्रैंकली स्पीकिंग, थर्ड पेपर का जो सिलेबस है ना वो बहुत जी। वास्ट है, बहुत वास्ट है। हाँ हाँ। तो वो पता नहीं, वो तो अथॉरिटी किए हैं तो हम उसको तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, लेकिन सिलेबस तो जी। बहुत वास्ट है। थर्ड पेपर में नो। जितना सिलेबस दिया गया है वो बहुत वास्ट हाँ ही हाँ। सिलेबस है। लेकिन जब इसीलिए मैं क्या किया, जितना भी सेशन रखा आप देखिएगा, सबको मैं थोड़ा बहुत टच कर रहा हूँ, बिकॉज वी डू नॉट नो वेयर फ्रॉम द क्वेश्चन विल बी। ओके, सो नो जितना नो, भी आपका सिलेबस में है। जस्ट आस्किंग मी, पेपर फोर्थ एंड फिफ्थ, या both papers are practical and theoreticals, या but no mentioned in paper third about theory or practical, but syllabus shown as a practical or theory. नो नो, क्वेश्चन विल कम, क्वेश्चन विल कम, मीन्स Okay, प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल कम, okay, 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल कम। okay sir, thank you sir. यू हैव, हाँ, टेल मी, बोले। ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा ना, ऑब्जेक्टिव कहाँ आ रहा है, हमेशा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, वीडियो हम अपलोड करेंगे, लेकिन वीडियो हम क्यों नहीं किया आप लोग को पता है? मैं क्यों वीडियो अपलोड बंद कर दिया आप लोग को पता है? वेरी पर्पस, आपको पढ़ाना है, सिखाना है। हम पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं इसको, आपको एग्जाम के लिए फिट करेंगे, मेरा हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। जितने भी रिसोर्स पर्सन आपका पास लगे हैं, ऑब्जेक्टिव यही है, सो वी विल मेक यू फिट फॉर द एग्जाम। आपको वीडियो देंगे फॉर रिवीजन, ओके, अभी नहीं देंगे, फॉर रिवीजन पर्पस ओनली वीडियो विल गिव। अब वीडियो, जब वीडियो देने लगे, पीपल बोलने लगे नहीं, देन वी विल नॉट अटेंड द सेशन, देन फ्रॉम नो वन ऑफ यू देयर, आपको कोई बोले उधर कि नहीं नहीं ऐसा क्या है, क्वेश्चन भी अटेंड करो, अपलोड करेंगे, वेट वेट हाफ पेशेंस, ओके, वेट हाफ पेशेंस, इट विल बी अपलोडेड फॉर रिवीजन पर्पस ओनली। आप अभी सिलेबस क्वेश्चन अटेंड, आप सेशन पढ़िए, जो भी हम दे रहे हैं आपको सिलेबस, जो भी स्टडी मटेरियल, उसको रेफर कीजिए। ऑडिट मैनुअल वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट मैनुअल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको आप जाइए। ओके, एवरी सेशन हम जो भी दे रहे हैं, जो भी रिसोर्स पर्सन ले रहे हैं, उसको वेरी केयरफुली, वेरी कंसेंट्रेटली सेशन अटेंड कीजिए। ओके, तब आप केयरफुली सुनिए, आप बार बार हिंदी इंग्लिश वो बात में मत जाइए। ठीक है, जो भी लैंग्वेज हो रहा है आप समझने का कोशिश कीजिए। अब इंडिया में रह के हम बोल नहीं सकते मैं हिंदी नहीं समझ पाऊंगा, कहीं नहीं, वो भी कोई नहीं बोल पाएगा मैं इंग्लिश नहीं समझ पाऊंगा, समझना पड़ेगा। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, देन हाउ विल बी डीलिंग विद पब्लिक देन? ऐसा नहीं मैं हमेशा मेरा घर में ही रहूंगा, ऐसा है क्या? तो आई विल बी ट्रांसफर टू एनीवेयर देन। सर वीडियो को, जो वीडियोस हैं आफ्टर 1 वीक आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसा करेंगे, यू वेट, वीडियो करेंगे, वीडियो आपको बोला हूँ करेंगे करेंगे। वीडियो में क्या है, ये जो सेशन आप तो सुनेगा, और एक बार बात यही है ना, सर ये ऐसा हो सेशन, जाता है कभी कभी सर, सेशन मिस हो जाता है, इसीलिए आप 1 वीक का इकट्ठा वीडियो तो अपलोड कर सकते सेशन हैं क्यों, आपके। वही क्वेश्चन कम अगेन, सेशन क्यों मिस होगा, क्यों मिस होगा बोलिए? रिसोर्स पर्सन का तो सेशन मिस नहीं करते कभी, मैं अभी तक कभी एक सेशन हम बंद किए? अभी तक जितना भी सेशन हुआ है, एक भी सेशन में बंद किया हूँ? नया सेशन कोई भी रीजन से हो नहीं पाएगा, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो। अब बिहाइंड द स्क्रीन में आपको कुछ नहीं पता है क्या प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, सेशन चल रहा है, तो आप क्यों सेशन मिस करेंगे? आप भी सेशन मिस नहीं करना चाहिए, मेरा ये रिक्वेस्ट। ओके, अगर आपका रिसोर्स पर्सन इतना सिंसियर है तो आप क्यों इतना सिंसियर नहीं होंगे, सेशन क्यों मिस करेंगे? अगर कहीं जा रहे हो, ओके, आप वीडियो सुनते जाइए, मोबाइल फोन फोन आपका हाथ में होगा। सर अगर कोई आप ट्रेन में बोलेंगे, होता है, कोई कहीं होता है, कभी कभी ट्रेन में नेटवर्क तो नहीं आते, वो रास्ते में वो तो हम वो कर सकते हैं। वो अलग बात है, देन यू आर नॉट सिंसियर, वो अलग बात हुआ, वो अलग बात हो गया। तो फिर वीडियो अपलोड में मना नहीं किया, वीडियो अपलोड होगा, बट हाफ पेशेंस। आप जितना, ऐसा नहीं कि ओनली वीडियो में ही पढ़ पाएंगे, आपका स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ओके, स्वामी हैंडबुक,
वो बिल्कुल न्यू है, स्वामी हैंडबुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़े, आप लोग पढ़ रहे हैं सब? 2023 स्वामी हैंडबुक लीजिए सब, बिल्कुल 2023 स्वामी हैंडबुक को पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो स्वामी हैंडबुक पढ़िए, ऑडिट मैनुअल पढ़िए, जेफर भी पढ़ना पड़ेगा। कितना चीज है पढ़ने के लिए? ये आपके ये सेशन में सब कुछ है क्या? सेशन, ये जो सेशन है आपको ओके कुछ पाथ दिखा रहे हैं। जो लोग जो थोड़ा बहुत डार्क में है या बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनको थोड़ा दिखा रहे हैं। आपको पुराना भी क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कराएंगे। अभी जो मैं असाइनमेंट आज दे रहा हूं आपको, प्लीज 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 उसको अटेंड कीजिए, सब अटेंड कीजिए। ओके, गलत होगा तो अटेंड कीजिए। हाँ, वो सेशन में नहीं लिया, नहीं कराया, सेशन होगा लेकिन आप अटेंड कीजिए, क्योंकि ना आफ्टर सेशन सेम क्वेश्चन फिर मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, वीडियो सर्टनली मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन पेपर सुनिए, 2014 का लास्ट एग्जाम हुआ था आईसीआर में, तो क्वेश्चन पेपर 2014 ही होगा। एसेट, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपका प्रोविजन, एसेट का प्रोविजन, जो एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं अप्रैल टू सितंबर का अंदर अगर कुछ एसेट प्रोविजन परचेज करेंगे, डेप्रिसिएशन उसका जो रेट है उसका हाफ रेट चार्ज करेंगे, नॉट फुल। अगर डेप्रिसिएशन 20% है, अब 10% होगा। सॉरी, अप्रैल टू सितंबर में परचेज करेंगे तो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फुल। बट अक्टूबर टू मार्च में परचेज करेंगे तो नेक्स्ट हाफ में हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है कि जो एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है, आप एंटायर एक्सपेंडिचर को एक साल में प्रॉफिट को चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप उसको आप 3 to 5 ईयर्स में चार्ज कीजिए। मींस एक ब्रिंगिंग द एस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज, आप ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, वो करोड़ में कर रहे हैं, तो उसको अगर एक साल में चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, योर लॉस विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। ओके, मींस प्रॉफिट विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। तो इस हिसाब से आपको 3 to 5 ईयर्स में उसको चार्ज कीजिए। दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नो सॉफ्टवेयर, any software develop intangible assets are a patent, copyright, like those things, goodwill, patent, copyright. Software development, okay, again, if for developing that software, if अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, उसको लीगल फॉर्म में लाया है, then it will be treated as patent intangible assets. No, only development of software will not be treated as आपका इंटेंजिबल एसेट्स। डिप्लीशन क्या है? डिप्लीशन मींस आपका पास कुछ एक कोल माइंस है, कोल माइंस, या आपका ऑयल है, उसमें अगर कोल आप एवरी ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो खादान से आप कोल ले रहे एवरी टाइम, वो तो उसको कम होते जा रहा है ना, उसका वैल्यू तो रिड्यूस होते जा रहा है ना, तो उसको डिप्रिसिएशन नहीं बोल के डिप्लीशन बोलते हैं, वही है। Every session you should be attentive. Every session you see, some people are asking, you see there are how many participants now? 155. Then how it is 155? There are more than 350, around 350 participants are there. Okay, some participants are commonly using the Zoom platform, that I know. In some institute combinedly setting, but it should be more than 250. Then that means some people are also not interested. Okay, for the namesake also. Oh, that's true, everything is true, but that software, who will treat that as intangible assets? We cannot treat, na. Your authority should treat it as an asset. Means one undertaking, memorandum of understanding has to be made, then only. Okay, then once again I am repeating, I will give you pre-training quiz session 2, maybe today night or tomorrow morning it will be released. Pre-training quiz
Session 2, part 2. 45 questions will be there. You please answer those questions within 1 day time. Means before the completion of the Friday session, sorry, before the commencement of the Friday session, you hand over that quiz, submit that quiz. Otherwise, again, you may not get opportunity to submit. Okay. So quiz part 2 will be given. Assignment 1 and 2 will be given. Okay. Yeah. Audit manual 2015 is latest. जेम का क्लास होगा सब्सिक्वेंटली, डोंट वरी. जेम का क्लास सब्सिक्वेंटली होगा. सर ऑडिट मैनुअल 2015 में डायरेक्टर फाइनेंस का पावर है, लेकिन सर अभी जेएस फाइनेंस है तो वो कुछ और पावर कुछ में। नहीं. आप फिर डेलीगेशन ऑफ पावर भी है ना आपका साथ. अच्छा आपका हाथ में डेलीगेशन ऑफ पावर है ना, उसको भी देखिए साथ साथ. जो ऑडिट मैनुअल में जो चीज, जैसे बिल कैसे पास होता है, कैसे उसको, वो सब चीज में चेंज हुआ है क्या? वो चेंज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स ऑफिसर डीडीओ, वो सब में चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है. तो जो चेंज नहीं हुआ है उसको रेफर कीजिए. डेलीगेशन ऑफ आपका पावर भी है, फाइनेंशियल पावर, उसको देखिए आप. ओके. दो चीज साइमल्टेनियसली. हाँ जी. सर जीएफआर 2017 आया था लास्ट, उसके बाद अभी जो सर की क्लास हुई थी उसमें वो जीएफआर 2023 बोल रहे थे. नहीं, मैं तो भी आपको सुनिए, मैं भी एक जीएफआर 2023 सर्कुलेट किया हूँ, मेल में दिया हूँ. अच्छा वही वाला लेना है ना सर, फिर मतलब हाँ, फाइनली. वो वाला लीजिए. सुनिए, ठीक. बेसिस जीएफआर 2017 is the basis. ओके. Afterwards, some changes have been made. Some changes. Overall, GFR in total it has not been changed. कुछ ओके. चेंजेस हुआ है. जो चेंजेस आप इवनिंग सम सर्कुलर से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. ओके थैंक वो यू. 23 में भी आपको तो सर्कुलेट किया हूँ, 2023. Good evening, sir. थैंक यू. हाँ, गुड इवनिंग. Sir, can we repair fully depreciated equipment? हाँ जी. Can we repair the fully depreciated equipment? नहीं, फुल्ली कैन, आप वो क्वेश्चन क्यों आता है? इसलिए आप जो फुल्ली डेप्रिसिएटेड इक्विपमेंट है तो आप उसको क्यों रखे हो फर्स्ट, वो क्वेश्चन बोलो. अगर फुल उसको स्क्रैप वैल्यू करो. Because sir, still it is working condition. फिर अगर अभी आप क्वेश्चन में आ गए, अगर आप बोल रहे हो तो एसेट इज स्टिल इन वर्किंग कंडीशन, तो फिर क्यों आप पैसा नहीं खर्चा करेंगे? अगर आपका इंस्टीट्यूट का पास पैसा नहीं है, But sir, means as you- per depreciation rate, its value is now fully depreciated. आप सुनिए, फिर आप एट ए टाइम दो टाइप का बात क्यों करते हैं? इसलिए तो मैं क्वेश्चन किया आपको. अगर आज पर डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएटेड वैल्यू 0 है, आप उसको स्क्रैप नहीं करके रखे क्यों अभी तक? Sir, because it in working condition, it is फिर still एक working. क्वेश्चन क्यों आ रहा है? अगर वर्किंग कंडीशन में है तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है रिपेयरिंग में पैसा खर्च करने में? मान लीजिए इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं है, नया एसेट परचेज करने के लिए पैसा नहीं है, Yes, yes, sir. तो फिर तो Okay, आप क्या रिपेयरिंग अकाउंट ऑफिसर क्या खर्चा के मतलब रिपेयरिंग के लिए अलाउ भी नहीं करेगा पैसा क्या? ऐसा तो नहीं है ना. okay, means we can repair, sir. हाँ, यू कैन गो फॉर रिपेयरिंग, नो प्रॉब्लम. Okay. ऑडिट मैनुअल शुड बी अपडेटेड. वो आईसीआर मैडम करेंगे, हम कहाँ करेंगे? जो भी है 15 दैट इज लेटेस्ट. ओके. आप जितना डिफिकल्टी को मत ढूंढिए, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी में जाइए. डिपोजिट ऐसे डिफिकल्टी तो बहुत है. जैसे वो कोई साहब बोल रहे थे, मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं क्लास मिस कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, डिफिकल्टी बहुत होगा. लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी में उसका बेनिफिट आप कैसे लेंगे, वो हिसाब से चलिए. ओके. डिफिकल्टी आएगा जाएगा, जितना अपॉर्चुनिटी है उसका कैपिटलाइज कीजिए. कैपिटलाइज का बात आज हुआ, उसको कैपिटलाइज कीजिए. आप ये भी आपको पता है, मुझे बोलना ठीक नहीं है, आईसीआर सिस्टम में इस टाइप का अपॉर्चुनिटी आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है. ओके. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसका बेनिफिट जितना लेना है लीजिए. आप जितना ले सकते हैं आप लीजिए इसका बेनिफिट. ओनली एग्जाम के लिए नहीं. मैं तो चाहता हूँ आप भी आपका नॉलेज शेयर कीजिए, नॉलेज एनहांस कीजिए. कल भी हम दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, आपको भी एज ए रिसोर्स पर्सन लेंगे. ओके. आपको भी लेंगे एज ए रिसोर्स पर्सन, उसमें कुछ बात नहीं है. जो भी सिखा पाएगा वो करेगा, उसमें क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर.
Okay. Yeah, question will be shared. Question will be shared. Today only I am sharing. You just, after the closure of the session, you will be getting within 5 minutes. Yeah, within 15 minutes. Assignment 2, assignment 1 and 2 you will be getting. But you please submit it. You please submit. Balance sheet, okay, session will be there, and they will tell you balance sheet every time, assets and liability will be equal. Assets and liability will be equal, then only it will be balanced. Balance sheet will be prepared. Okay, otherwise how it will be prepared? Okay, boss, thank you. Thank you very, very much for your patience hearing. Okay. Your next session tomorrow, I think it is on GST. Session will be delivered. One of the most expert in ICR system. Tomorrow will be knowing. Okay. GST session will be a very interesting session. Okay. Okay. Thank you. Today we are closing the session. Thank you. Thank you very much.